आगे आ जाओ। How are you? अच्छा, ध्रुव, अनुष्का, अंजलि, आकृति, आफरीन, आदित्य, संध्या and Lakshmi are there. Is Dhruv the same Dhruv of our class? एक सेकंड, इसमें दिख ही नहीं रहा है।
हाँ जी, राइट लाइवली। नहीं नहीं, सिर्फ विजडम। हाँ, मतलब किसी को हार्म नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ, एथिक्स है एंड इन्वॉल्व्स बेसिकली अगर तुम ट्रेडिंग भी करते हो, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं चोरी होती है, राइट। सो इट्स अगेंस्ट दैट कि तुम्हारा लाइवलीहुड ऐसा होना चाहिए कि वो किसी चोरी से रिलेटेड ना हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वो है मेडिटेशन के पार्ट्स हम पढ़ेंगे, मेडिटेशन के। तो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ मेडिटेशन। 6th वन इज राइट एफर्ट, ठीक है। राइट एफर्ट में क्या है? पंकज, राइट एफर्ट्स मतलब बेसिकली नेगेटिव थॉट्स को तुम्हें निकालना है, देन यू हैव टू हैव प्रॉपर पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, ठीक है। दैट्स राइट एफर्ट्स। उसके बाद क्या है राइट माइंडफुलनेस? क्या होता है ये? इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करना होता है। तो राइट माइंडफुलनेस होती है दैट यू शुड हैव कंट्रोल ऑन योर बॉडी, ऑन योर माइंड, ऑन योर फीलिंग्स, राइट। यू शुड नॉट हैव दोस इमोशनल बैगेजेस इन यू कि तुम्हें कोई काम करने से रोक ले, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव राइट कंसंट्रेशन। यस, आया समझ में? सो दिस मेडिटेशन इज लाइक दैट यू आर फोकसिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। और जब तुम एक चीज पे स्थिर दिमाग लगाते हो, इट हेल्प्स यू इन योर डेली लाइफ आल्सो, ठीक है। इफ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज देन इट विल हेल्प यू। दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू द मेडिटेशन। कोई नहीं करता होगा ना? थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कैसे होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। कैसे नापते हो थोड़े को? ग्राम में, लीटर में, कैसे? चलो, समझ में आए सारी चीज? अब इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि लिखो, वीजा लिखो, ठीक है। मतलब व्यूज आ गई, इंटेंशन आ गई, स्पीच आ गई, एक्शन आ गया, लाइवलीहुड, एफर्ट, कॉन्शियसनेस, और फिर उसके बाद वन पॉइंटेडनेस, दैट इज कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ, वो भी ठीक है। हाँ, एक तो 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, बुद्धा का, इट शुड नॉट बी ऑन योर टिप, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसके संस्कृत वर्ड्स याद कर सकते हो, इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। ऐसे टफ तो कुछ नहीं है इसके संस्कृत वर्ड्स। निर्वाणा याद कर लो, ठीक है। इनके 8 के संस्कृत वर्ड्स याद कर लो, जो कि बहुत आराम से याद हो जाएंगे। देन अबाउट जैनिज्म, अनेकांतवाद और स्यादवाद थ्योरीज की, ठीक है, ये दोनों थ्योरीज तुम्हें पता होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक द टेस्ट, दैट इज टुमारो, विद जैनिज्म, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डोंट बी एब्सेंट। अनेकांतवाद और स्यादवाद, हाँ, तुम कल लोगे ना, लिखोगे, पहले पढ़कर आ जाओ, फिर उसके बाद मैं बता दूंगी। तो पहले मैं क्लास में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके बाद आई विल गिव यू द टाइम कि तुम 5 मिनट बाद लिख लो उसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आफरीन, आकृति, अंजलि, अनुष्का, ध्रुव, लक्ष्मी, पलक, संध्या, विकास। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? हाँ, अनेकांत बोलो। क्या होती है मेटाफिजिकल थ्योरी? ओके। जैसे मैम एक हाथी है, तो वो आदमी मतलब जो भी पंजाब को भेजा गया था, वेटरनरी आदमी को, तो उन्होंने पहले पहले हाथी का सुर को पकड़ा, ट्रंक को, उसको लगा ये स्नेक है। और दूसरा में जो उसका लेग्स पकड़ा, उसको लगा पिलर है। तीसरा उसका जो टेल मतलब पूंछ पकड़ा, तो उसको लगा ये रस्सी है, वो है। फिर में जो उसका कान पकड़ा, तो उसको लगा पंखा है। जो उसका बेली मतलब पेट पकड़ा, तो उसको लगा ये वॉल है। और मैम जो उसका टीथ पकड़ा, तो उसको लगा ये मतलब भाला जैसा है। तो मतलब इससे ये होता है देखने का नजरिया अलग अलग है, चीज एक ही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। पीपल कैन बी राइट टू, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी पोजीशन अलग हो सकती है, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सारा सच जानता है तो वो पूरा एक सच जानता है, मतलब सिर्फ एक ही जानता है। गॉट इट। सब कुछ जानने के बाद भी वो एक सच जानता है। सच बहुत भी हो सकती है। जैसे हम करंट अफेयर चार्ल्स को जो शॉर्ट डेट कर दिया कि अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तुमने मेरी वीडियो देखी होगी। कभी से जो आचार्य सेना में मतलब लिखे गए थे,
Immature people deny various aspects of truth. Deluded by the aspects they don't understand. They deny the aspects they don't understand. Very good, very good, very good. और सियादवाद क्या है? बहुत सिंपल बोले कि एक बोले थे। शायरी थोड़ी ना सुना रहे हो। आप मतलब लाइफ को किस तरह जीना चाहिए और किस प्रकार का काम करना चाहिए। क्या है? मतलब किस तरह लाइफ को जीना चाहिए और किस प्रकार जीना चाहिए। कल सियादवाद और अनेकांतवाद तुम पढ़कर आओगे। हाँ प्लीज। इधर से देखेंगे तो हमें 6 दिखेगा, वहां से जो देखेगा उसको 9 दिखेगा, तो मतलब सबका अपना जैसे एक पत्थर है, इंडिफरेंट देखा जाए इससे तो बाहर से मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन में कंडीशन। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती क्योंकि आई वांट टू सी कि तुम पढ़ के कितना समझ पाते हो। ठीक है, तो सियादवाद और अनेकांतवाद यू विल रीड टुमारो टुडे एंड देन यू विल प्रेजेंट इट इन द फ्रंट ऑफ द क्लास। ठीक है, शायद गुड। तो क्या करना है कि एक्सप्लेन करने के साथ साथ यू हैव टू कम विद द करंट अफेयर्स, लिंक दैट जेनिज्म थ्योरी विद द रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, एंड दैट करंट अफेयर शुड बी रेलेवेंट। ठीक है, आज के टाइम पे ट्रेंडी होना चाहिए। ठीक है, डन। 2 करंट अफेयर्स यू हैव टू लिंक इट। कल ही लिखना है। क्यों करते हैं परसों? क्या है कल? मैम आप नोट्स भेजने के लिए बोली थी ग्रुप में। कौन से नोट्स? नोट्स कौन से बोले मैंने? जो अभी पढ़ा रहे हैं मैम उसके बारे में आप बोली थी कि ग्रुप में नोट्स भेजेंगे रिगार्डिंग एकांतवाद और एट फोल्ड पाथ के लिए। इससे रिलेटेड किससे रिलेटेड? बुद्धा से रिलेटेड जो नोट्स भेजने थे। हाँ तो एक बार तुम जैनिज्म कल समझ लेते हैं, उसके बाद गिव यू द नोट्स। मुझे याद दिला देना कोई। ठीक है, नहीं अब तक की केस स्टडीज तो मैंने रैंडम भी बनाई है, कुछ जो मैंने डिक्टेट कराई है क्लास में, दैट आई कैन नॉट प्रोवाइड यू, बट रेस्ट ऑफ दैट जो मैंने उस दिन प्रेजेंट करी थी ग्रुप में, उसमें से एक मैं दे चुकी हूँ, द अनदर वन आई विल लीव इन द ग्रुप। ठीक है, okay, next heading, write down please sympathy, empathy and compassion. Sympathy, empathy and compassion. Sympathy, empathy and compassion. Sympathy, empathy and compassion. पंकज, क्या है sympathy? We should be okay. Empathy ये हो सकता है, मतलब feeling और emotion. एक सेकंड नहीं, अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, पंकज क्या है सिंपैथी? काइंड और एम्पैथी क्या है पंकज? कंपैशन, ओके। राशि, सिंपैथी, emotion of किसी के लिए sympathize करना कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमें भी कीवर्ड फील हो रहा है। कीवर्ड feeling the emotion of sympathy basically. Empathy, being in that particular person's shoes and like feeling the same emotion as the compassion, feeling compassionate about helping that person who needs help.
आयुषी से पीछे। और एम्पैथी में ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज डोंट मेक मी रिपीट योर नेम्स, आई वांट आंसर्स इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ। कंपैशन में केयरिंग, केयरिंग एंड मर्सी। सिंपैथी क्या हुआ? सपोर्ट, सपोर्ट करना, ओके। और सिंपैथी, ओके। आयुष ने बोला सेम। गौतम, मतलब जैसे फीलिंग हाँ, सिंपैथी दूसरों के दुख को समझना। इजंट दैट द सेम थिंग, फीलिंग इमोशंस? सेम, सेम ही है दोनों, सेम। तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिया है इसको? कंपैशन, इसमें फीलिंग सिंपैथी। अच्छा, कंपैशन डॉक्टर। तुम्हें सबको याद आ रहा है कि इंडियन सोसाइटी में कुछ तो कराया था ऐसा? जबकि हम 10 मिनट डिस्कस कर चुके हैं इस पे। आकृति says sympathy is comfort. Palak says understanding is sympathy. Anushka says empathy is caring. ओके, तो सिंपैथी का मतलब है कि रिकॉग्नाइज करना कि फाइनली लाइक यू आर टेलिंग देम, जैसे बुद्धा ने किया था कि यस पीपल डू सफर, तो दैट इज लाइक सिंपैथी। ठीक है, कि हाँ तुम लोगों की दुनिया में दुख है, सपोज यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई रिकॉग्नाइज दैट सफरिंग, दैट आर यू ओके, ठीक है, आर यू फीलिंग फाइन, राइट? सो आई एम बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग योर सफरिंग, सो दैट इज सिंपैथी। ठीक है, लाइक आई फील बैड फॉर यू, आई एम सॉरी दिस हैपेंड टू यू, सो दिस इज सिंपैथी, राइट? Empathy is like you are putting yourself in another person's shoes and then you are recognizing their suffering, right? कि मुझे भी ऐसा फील हुआ तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था. So this is called what? This is empathy. Compassion is you are doing something for their suffering. ठीक है, you are not only putting yourself in that particular person's shoes, you are actually doing something. There is action. ठीक है, किसने बोला था ये action वाला? तो ओके, सो बेसिकली जब हम एक्शन कर रहे हैं किसी के लिए, बेसिकली हम डूइंग समथिंग कि वो सफरिंग दूर हो जाए, दैट्स कंपैशन. सो टेल मी दैट should that civil serviceman, should he be like compassion, sympathy or like empathy? What he should have? कंपैशन भी होनी चाहिए, एम्पैथी भी होनी चाहिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Please unmute yourself. Compassion, ma'am. Compassion. Who said it? Compassion, Vikas. Okay. मैंने लास्ट लाइन क्या बोली थी कंपैशन के बारे में? तुम ऐसे मैथ्स क्यों बना देते हो बिल्कुल? मैं तो मेरे सर से निकल गया. कंपैशन में सिंपैथी और एम्पैथी दोनों ही आती है. ठीक है, कंपैशन के अंदर ही लाइक यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन दैट पर्सन शूज, यू आर रिकॉग्नाइजिंग देयर सफरिंग एंड देन यू आर डूइंग अनदर स्टेप, दैट इज यू आर डूइंग समथिंग यू नो टू रिमूव दैट सफरिंग. सो अ पर्सन शुड हैव व्हाट? कंपैशन, राइट? चलो राइट डाउन. बट कंपैशन में ऑलरेडी सब कुछ ही है ना. आगे बढ़े उसके बारे में, वो अलग ही कंसेप्ट है. But then this person feeling varies now when it comes to the power,
तो इसीलिए यहाँ पे नहीं डाला हुआ। हाँ, राइट डाउन नाउ सिंपैथी। सिंपैथी तुम्हारा टेस्ट कब है? एक सेकेंड मैं लिख लेती हूँ, भूल जाऊंगी। So we have test on Friday. हाँ? रटना नहीं है, क्यों रटना है तुम्हें? तुम एथिक्स में भी रटोगे? चलो राइट डाउन सिंपैथी, recognizing someone suffering and feeling sorry for them. Recognizing someone's feeling, so someone suffering and feeling sorry for them. Feeling sorry for them. Next line, it is more superficial. It is more superficial, comma, I forgot your name. क्या क्या डेफिनेशन है इन तीनों की? वैसे सुन ही लिया है तो। क्या है सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन? If you have to define them in one word, how will you define it? With one keyword. What is sympathy? You can say you're understanding the pain that someone's having. Okay, and empathy? Empathy, and mainly you're connecting with them, along with their emotions and their. You are feeling their pain by putting yourself in the shoes, basically by feeling the same pain that they are having. Okay, and compassion is? Helping and taking action. Okay. Next line, it is more superficial. It is more superficial, comma, you understand they are suffering. You understand they are suffering, but don't deeply connect. But don't deeply connect. Deeply. You understand they are suffering. Understand they are suffering. मैं तेज डिक्टेट करा रही हूँ. पंकज, is the dictation fine? थोड़ा सा. You understand? नहीं, मुझे सिलेबस नहीं बढ़ाना है. मतलब मुझे ऐसे डेज वगैरह का कुछ इश्यू नहीं है. चलो, you understand they are suffering. You understand they are suffering, but don't deeply connect. But don't deeply connect. ये ऐसे डिक्टेट करूं मैं? 7th क्लास के बच्चे हो तुम लोग? तुम तो फिर मेरे करंट अफेयर्स नहीं सुन पाओगी. Write down example. Seeing a beggar, seeing a beggar, seeing a beggar on the street, and thinking, seeing a beggar on the street and thinking, comma, poor man, comma, life is unfair. Life is unfair. Full stop. So this is like showing pity towards that person, right? You're feeling bad for that person. You're recognizing their suffering. Okay, next, empathy. Empathy, putting yourself in another person's place, putting yourself in another person's place, in another person's place,
in another person's place, comma, feeling their pain, feeling their pain, feeling their pain as if, feeling their pain as if it were your own, as if it were your own. Write down next line, emotion. Emotion, in front of it write down, I feel your pain, I feel your pain, comma, I understand what you are going through. I understand what you are going through. So basically this involves, cognitive involvement. Cognitive involvement ऐसे basically your thoughts and emotions are present with that particular person. ठीक है? So write another word, cognitive involvement. ठीक है? What you are going through. उसके बाद देखो cognitive involvement. Cognitive involvement ऐसे है क्योंकि तुम्हारे thoughts और emotions जो है उस बंदे के साथ connected है, right? Cognitive involvement. तो कोविड-19 में डॉक्टर्स और नर्सेस ने लंबे टाइम तक काम करा था, राइट? सो दैट्स शोइंग एम्पैथी आल्सो, ठीक है? राइट नेक्स्ट, कंपैशन. कोविड-19 कंपैशन. अब आई विल चेंज, इसमें कुछ और बोलूंगी. हाँ, एग्जैक्टली. कंपैशन, going one step beyond empathy, going one step beyond empathy. It only feels the suffering, it only feels the suffering, it not only feels the suffering, sorry, it not only feels the suffering, but also includes, but also includes a strong desire, but also includes a strong desire to reduce that suffering, strong desire to reduce that suffering. Next line, write down emotion, in front of it write down emotion, in front of it write down, I feel your pain and I want your help. I feel your pain and I want your help. तो केरला फ्लड्स जो 2018 में हुए थे, तो पीपल डिडंट ओनली फील बैड फॉर देम, सिंपैथी नहीं थी, बेसिकली वहां पे एम्पैथी भी थी, कंपैशन भी इंक्लूडेड था, बिकॉज दे डोनेटेड रिसोर्सेज एज वेल, ठीक है? सो यू कैन राइट दैट एग्जांपल इफ यू वांट टू. नहीं, 2018 में भी तो हुआ है ना. नाउ राइट डाउन कंपैशन एज 4-step प्रोसेस, compassion as a 4-step, yes, compassion. कौन सा ऊपर वाला? एम्पैथी वाले में तुम लिख सकते हो कोविड-19 का बताया था, या फिर तुम लिख सकते हो कि तुम्हारा फ्रेंड जो है वो फेल हो गया एग्जाम में एंड देन यू आर लाइक पुटिंग योरसेल्फ इन दैट शूज बाय फीलिंग योरसेल्फ, और फिर उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मुझे भी पता है कैसा फील होता है. चलो, compassion as 4-step process. First step is being aware of someone's suffering. First step is being aware of someone's suffering. अब मैं यहाँ पे कोविड का एग्जांपल नहीं दूंगी.
चलो तुम एग्जांपल दो करंट अफेयर का। हाँ कैसे? And we felt bad for that. The first step is the first step is in the keyword. Thank you. Sympathy. Okay, next, being emotionally moved by suffering. Second, being emotionally moved by suffering. Being emotionally moved by suffering. तो अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, राइट, एंड वी सी पीपल सफरिंग, ठीक है, तो वी फील देयर पेन, राइट? सो दिस इज द सेकंड स्टेप, राइट? थर्ड स्टेप डेवलपिंग अ, हर उसमें एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कंपैशन के लिए एक एग्जांपल याद रखना है। हाँ, नहीं नीड होगी ही नहीं, इतना लंबा आंसर ही नहीं होता हमारे पास लिखने के लिए। थर्ड, डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प। डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प। इसमें अगर तुम एग्जांपल दे रहे हो, तुम सोनू सूद का एग्जांपल दे सकते हो। डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प, राइट? फोर्थ, taking necessary steps to resolve suffering. Taking necessary steps to resolve suffering. कि उसने कैसे बसेस अरेंज करी, ट्रेन्स अरेंज करी, फ्लाइट्स अरेंज करी फॉर द वर्कर्स, फॉर द पीपल ड्यूरिंग COVID-19. ही हेल्प्ड लॉट्स ऑफ पीपल. रीड अबाउट इट. लाल बहादुर शास्त्री का एग्जांपल दे सकते हो, दैट हाउ ही अर्ज पीपल टू स्किप वन मील अ वीक. ठीक है? टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू रिजॉल्व सफरिंग. Taking necessary steps to resolve suffering. Next heading, significance of compassion. Significance of compassion. First, foundation of public services. Foundation of public services. All other values like integrity, impartiality, and dedication integrity, impartiality, and dedication lose their meaning without compassion. Lose their meaning without compassion. Next pointer, the core purpose of civil services is to, the core purpose, compassion. The core purpose of civil service, the core purpose of civil service the core purpose of civil service is to reduce human suffering, and promote welfare, is to reduce human suffering and promote welfare. Next, building trust in governance. ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, खुद से लिखो.
कैसे होगा, कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा? लिख लिया सबने? ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और विदाउट करप्शन वी शुड स्टार्ट वर्किंग। लिख लिया? हर पॉइंटर का एग्जांपल मतलब तुम सोच लो, ठीक है, इट्स गुड दैट यू आर कनेक्टेड, बट उसका हर पॉइंटर का एग्जांपल मत लिखो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि हम हर कीवर्ड का एग्जांपल लिखें। बट यस, जो बेसिक कीवर्ड्स हैं, फॉर दैट योर एग्जांपल शुड बी प्रिपेयर्ड। क्या? ओके, राइट डाउन। For millions of citizens, for millions of citizens, civil servants, civil servants are the face of government. Civil servants are the face of government. Displaying compassion, displaying compassion, displaying compassion and empathy, displaying compassion and empathy ensures and empathy ensures that people feel respected, that people feel respected and valued thereby, अभी भी fast है, okay, thereby strengthening trust in institution, thereby strengthening trust in institution. Third, overcoming stereotypes, overcoming stereotypes, overcoming stereotypes. It's third. The first one is foundation of public service, second one is building trust in governance, third is overcoming stereotypes. Huh? Overcoming stereotypes. अब हमारी इंडियन सोसाइटी स्टीरियोटाइप से भरी हुई है, राइट, एंड दे हैव लाइक इम्प्लीमेंटेड दीज स्टीरियोटाइप्स इन ट्रेडिशंस, ठीक है, कस्टम्स में, कि दिस इज लाइक इन आवर कस्टम, देन वी हैव टू फॉलो दिस। जेंडर बायसनेस, ठीक है, हमारा कास्ट रिलीजन बायसेस, राइट, सो यू हैव टू टैकल ऑल दिस विदाउट हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स आल्सो, ठीक है, सो दैट्स द डिलेमा दैट यू विल फेस, और इस काइंड की केस स्टडीज भी आती है, राइट, सो प्लीज राइट डाउन। Indian society is riddled with caste. Indian society is riddled with caste, RIDDLED, with caste, class, और तुम लोग अभी प्लेन पेपर पे क्यों नहीं लिखते हो, रूरल पे क्यों लिखते हो, रूरल बुक्स पे? चेंज योर रजिस्टर। Riddled with caste, class, gender and religious biases, full stop. Compassion allows officers to rise above personal or societal pressure, and deliver fair
equitable governance, and deliver fair, equitable governance. Write down fourth one, rules in spirit, not just in letter. Rules in spirit, not just in letter. जब मैं बोलती हूँ ना that you have to write in the keywords and heading should be there, so this is how you have to write. ठीक है? Rules in spirit, not just in letter. In front of it, write down mechanical implementation. Mechanical implementation. Mechanical implementation of rules may cause hardship. Of rules may cause hardship. Mechanical implementation क्या है? जो उनको इम्पोज कर रहा है सिस्टम में और स्टार्ट implementing it or making it legal. Formal for people to follow. So mechanical implementation is so when these rules and regulations are introduced, ठीक है? And these people, these officers have the duty to introduce to them, right, to their citizens. So mechanical implementation is sometimes rules are so rigid and hard to follow. So basically humanity जो है कहीं ना कहीं वो लॉस हो जाती है, right, because they have to maintain the rules and regulations to be followed. तो वो gap maintain करके रखना है, ठीक है, between the humanity and the rules and regulations that are implemented, ठीक है? Write down. After cause hardship के बाद in full stop write down compassion helps officers. Compassion helps officers implement rules. Compassion helps officers implement rules in their true spirit. Implement rules in their true spirit. Rules in their true spirit, comma, ensuring justice along with humanity. Ensuring justice along with humanity. Shashank. Explain. Mechanical institution. Maybe मैम जब हम किसी मुझे नहीं उसे हिंदी किसी भी सिस्टम है किसी भी अगर हम कोई रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको फॉर्म कर रहे हैं तो हमें वहाँ के जो लोकल और जो उनका स्पिरिचुअल मतलब उनका जो बिहेवियर और इमोशनल कनेक्ट है उस चीज को लेके अफेक्ट जो पूरा कम्युनिटी के रूल्स और रेगुलेशन जो काफी टाइम चल रहा है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए सो दैट कोई भी मेजर डिफरेंसेस ना हो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में और लोग उनको अडैप्ट करें. Good. Pankaj, explain. ऐसे ये स्कूल रहता है कि बाइक में मतलब फिर मतलब 2 बंदे जा सकते हैं बट कभी इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ा हो वहाँ पे कोई और व्हीकल नहीं है किसी को हॉस्पिटल में किसी को भी लेके जा रहे हैं तो रूल तो है कि 2 ही जा सकते हैं लेकिन उस केसेस में मतलब वो होना चाहिए They should have flexibility. होनी चाहिए कि हाँ वहाँ पे उसको जाना है तो मैकेनिकली मतलब ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए कंपैशन होना चाहिए यहाँ पे इसको जाना. Good. I understood the meaning and example I understood. I was asking matlab of only 2 words, mechanical implementation. So mechanical, it's like it's very rigid. ठीक है? Sometimes it's hard to break, but you have to balance between the humanity and the rules and regulations. So that is the mechanical implementation. Next, write down citizen-centric administration. Citizen-centric administration. Compassionate officers, in front of it write down compassionate officers place. Compassionate officers place the people's problem at the center. Place the people's problem at the center of decision making. People's problem at the center of decision making.
center of decision making. This make administration this makes administration more responsive. This makes administration more responsive, humane, more responsive, humane, 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 and better for the society, and better for the society. Write down Swami Vivekananda quotes. Swami Vivekananda quote. The poor. Quotations जितनी याद रख सकते हो, please try to remember that. ठीक है? The poor, comma, illiterate, ignorant, comma, let these be your God, let these be your God, full stop, full stop. Service to these alone is the highest religion. Service to these alone is the highest religion. Hello. Now there is one case study. ठीक है? सुनो ध्यान से. So you are Rohit, an SDM trainee posted in a district. While returning from late night field visit on the expressway, you notice a motorbike accident. Two people are injured, one severely bleeding, the other unconscious. A small crowd has gathered, recording videos and posting them online. The situation becomes more complicated when you realize that one of the injured person is your distant cousin, with whom you have not spoken for years due to a family dispute. The other injured person is a daily wage worker returning home. Ambulance arrival is expected to take 20 to 25 minutes due to traffic. The crowd is doing nothing except taking photos and offering sympathy. You have your official vehicle, limited first aid material, and only one seat available due to equipment placed inside the car. You face dilemma whom you should take to the hospital first. Your cousin who is emotionally connected to you. So there is, इन तीनों में से क्या है? Emotionally connected. So this is what? Empathy. Empathy. And your family expects you to help him first. The daily wage worker who appears to be more critically injured and need urgent action. क्या इन तीनों में से? Or wait for the ambulance showing only, but risking the loss of both lives. ठीक है? So the question is, please write down. Situation समझ में आई और should I repeat the question again? The case study again? वहां हिंदी में नहीं पढ़ पाओगे तुम जो हिंदी लिखी. हाँ. And then you have us. Should I repeat again? Online students understood? एक बार और पढ़ देती हूँ केस स्टडी. हाँ? पढ़ समझ में आ गया? चलो. The question is, what should Rohit do in this situation? What should Rohit do in this situation? What should Rohit do in this situation? Justify using ethical principles. Justify using ethical principles. Question 2. Justify using ethical principles. Question 2. Differentiate sympathy. Differentiate sympathy, empathy, and compassion as shown in the case.
shown in the case. Question number 3. Question 3. Which ethical values should guide action here? Which ethical values should guide action here? Comma, justice, impartiality, comma, humanity, or personal loyalty, or personal loyalty. Pankaj, understood the question? Pakka? ध्रुव रिपीट कर दो. ध्रुव ने बोला रिपीट करने के लिए. Okay. So Dhruv, the case study is you are Rohit, an SDM trainee posted in a district. While returning from a late night field visit on the expressway, you notice a motorbike accident. 2 people are injured, one severely bleeding, the other unconscious. A small crowd is gathered, recording videos and posting them online. The situation becomes more complicated when you realize that one of the injured person is your distant cousin with whom you have not spoken for years due to a family dispute. The other injured person is daily wage worker returning home. So ambulance arrival is expected to take 20 to 25 minutes due to traffic. The crowd is doing nothing except taking photos and offering sympathy. So you have official vehicles, limited first aid material, and only one seat available due to equipment placed inside the car. You face a dilemma: whom you should take to the hospital first. Your cousin who is emotionally connected to you, that is empathy, and your family expects you to help him first. The daily wager worker who appears to be more critically injured and needs urgent action, that is compassion, right? So you wait for the ambulance but risking the loss of both lives. एक ही सीट है, 2 प्रॉब्लम्स है, बट अगर देरी करोगे दोनों की जान जाएगी. मुझे नहीं पता. हाँ, क्रिटिकल वो है, बट देन एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा. ठीक है, और जितना टाइम लगेगा वो 15-20 मिनट अप्रोक्स लिखा है, बट प्रैक्टिकली इट कुड बी मोर देन दैट. एक ही सीट, एक सीट में वो बैठा हुआ है, दूसरी अवेलेबल है. प्लीज राइट डाउन द आंसर्स, फिर उसके बाद विल हैव द डिस्कशन. नहीं है, बाइक है, एक पीछे सीट है और एक बाइक वो खुद ड्राइव कर सकता है. मैंने चेंज कर दिया अभी. चलो नहीं चल रही है उसकी कार, प्रॉब्लम है उसकी कार में. रोड बन रही है, सिर्फ जा सकती है, 2 व्हीलर ही जा सकता है वहां से. क्यों सोचना है, सिचुएशन तो तुम देखो कितनी खराब है. तुम लोग तो इस सिचुएशन में डरो, जब तुम पेपर देखोगे, केस स्टडी में एक्चुअली देखोगे ये सारी चीजें, तुम लोग तो बैठ जाओगे ऐसे करके. मैंने दिखाया था ना उस दिन पीवाईक्यूज कैसे आते हैं. ध्रुव बोल रहा है कि उनको हेल्प करनी होती तो पहले ही कर देते. अनुष्का सेज दैट ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम द लोकल्स जो वहां से निकल रहे हैं. ठीक है, अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज. और तुम लोग स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आंसर लिखोगे, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कंसिडरेबल नहीं है. It's 36, टाइम नहीं है.
Do you have a class after this? This is the last class, and you had like only this. I got that. Four minutes left. Bhumi, right? So what you will do by the next class, you will make the list of the students, of the offline students. ठीक है? हर एक बच्चे की लिस्ट बना के नाम के साथ you will give it to me tomorrow. ठीक है? And online के लिए नहीं, total offline में जितने भी हैं. ठीक है?
3 minutes left. लिख लिया? बताओ। अगर हम उसमें तो हम रोहित अगर एक ही सीट खाली होती है तो वन ऑफ देम रोहित में से एक को ले जाएगा किसी को भी, और फिर वो ऐसा एसडीएम उनके पास पावर है और सब कुछ है तो वो क्राउड में किसी को भी बोल सकते हैं कि एक को आप ले जाए। नहीं है कोई प्रेजेंट अभी तो भी क्राउड था, अब नहीं है। देखने के लिए व्हीकल तो उनके पास है, जिस व्हीकल से वो गिरे थे। भूमि एक ही व्हीकल है, एक ही सीट है, क्राउड नहीं है, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प नाउ व्हाट। किस तरीके से कर दे रहे हमारे आंसर के साथ। अच्छा चलो ठीक है, यू आर सेइंग दैट यू विल टेक हेल्प फ्रॉम द क्राउड। चलो ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद दिस शोज व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड। तुम आज ही तो लेट आई हो, रोज तो तुम टाइम से आती हो। So when you will see the recordings, when you will take the notes, क्योंकि टेस्ट भी है। पंकज Stakeholders are Rohit, 110 STM, crowd, person result, and is critical. how many are there? Four. How many stakeholders did you write? I wrote four. Four, okay. Observing the situation, Rohit, first of all, did the primary possible care with the first aid kit available to mitigate the worsening of situation. Then, being SDM, 180 years authoritatively asked the local to come out for help and to the hospital board of. फिर नहीं क्यों डालने हैं जब इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। बिल्कुल सिटीजन्स यू कैन राइट। नहीं वो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। नहीं स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो हर उसमें बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अफेक्ट वगैरह कोई सिनेरियो नहीं है। ओके तुमने क्या लिखा? हाँ तो मैंने तुम्हारा भी तो बोला, चलो ठीक है। स्टेकहोल्डर्स पे रोहित कजन है और वेज लेवल जो है और जो क्राउड वहां पे है उनको चार कैंडिडेट रहते हैं। मे बी इस सिचुएशन में रोहित प्रायोरिटाइज करेगा किसको प्रायोरिटी देगा? हाँ उस पर प्रायोरिटाइज करेगा जो सीवियर रेंज में वेज लेवल है उसको कंसीडर करना टेकिंग टू द हॉस्पिटल। व्हाई? बिकॉज़ वो सीवियर में पूरा करेक्ट बता नहीं दे शुड बी लाइक कीवर्ड ना, इसी के साथ में यूज करना था। मेनली आपने सिचुएशन बताई कि उसके पास माइनर फर्स्ट एड अवेलेबल है दैट इज कैरी
So we'll first do that kind of first aid to person who is less severely injured, and we'll ask someone else in the crowd to help taking him to the hospital, so that the major severe one, that is that is considering according to the situation, he should take him to the he should prioritize him to take him to the hospital, and the discussion should be followed by someone else. Okay, तुमने प्रायोरिटी किसको दी थी? तुमने? वो तो हो नहीं सकता, एक को ही करनी पड़ेगी ना। इसको सीवी वाले जो हम उसको सिखाते हैं, हाँ तो उसको प्रायोरिटी दी। प्रायोरिटी दिया रेलवे को, बट जो उसका करे ना उससे पहले फर्स्ट एड क्योंकि कसरी तो हम समझा लाइक ऐसी उसका लाइक सर्वाइवल टाइम थोड़ा और। पंकज तुमने किसको दिए प्रायोरिटी? किसको दिए? बोथ बोथ तो हो ही नहीं सकते, यू हैव टू चूज वन। दिस इज द होल डिलेमा इज अबाउट। ओके ठीक है, हाँ तुम बताओ। This is shows a concept of duties type of situation which involves the following stakeholders. Stakeholders like injured beggar or Rohit's cousin and Rohit's estate. Okay. Ethical dilemmas, objectivity versus partiality. Okay, very good. As a civil servant, Rohit must avoid favoritism. And second, personal duty versus professional duty. Very good. And first answer is Rohit should immediately call an ambulance or a nearby police station and inform about the incident. And he should take the beggar to the closest hospital as soon as possible. And the police or ambulance will come and take him, his cousin, to the hospital. And इसमें sympathy है कि Rohit feels sad seeing the cousin and the injured beggar both. Empathy है feels the beggar's pain as it was his own. And compassion is he helping the beggar by rushing him to the hospital. And इसमें humanitarian values. Very good, very good. आपने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। Very good. क्या? अगर ये हमने बोला होता ना, I will do the hospital. क्या नहीं होती? इसमें ये भी सिचुएशन क्लोजेस्ट हॉस्पिटल वाला अगर हम बोलते हैं ना कि उसको क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में वो सब छोड़ो, लुकिंग एट द कीवर्ड्स द वे शी मेंशन्ड, ठीक है, हर पॉइंटर में देयर वर लाइक मेनी कीवर्ड्स, ठीक है, एंड यू मेंशन्ड द ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स आल्सो, सो अनदर गुड पॉइंट, ठीक है, एंड दिस शोज अबाउट द इम्पार्शियलिटी एंड जस्टिस आल्सो, राइट, एंड दिस शोज आल्सो अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म। कैसे यूटिलिटेरियनिज्म कैसे दिखाता है यहाँ पे? व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म? आयुषी एक्सप्लेन। So utilitarianism is that when we are like reaching to greatest overall, ठीक है, maximum जो लोग फायदे में आते हैं, ठीक है, we are preferring them, ठीक है, because that worker is more critically, ठीक है, तो we are prioritizing him other than that cousin, हम उसे priority दे रहे हैं, so that is utilitarianism, ठीक है। उसके बाद this also shows about integrity and professional commitment also, ठीक है, तुमने priority अपने favoritism को नहीं दिया, you actually gave importance to your duty, ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स यूज करने हैं आपको। वेरी गुड आयुषी। हाँ हाँ तुम उसका भी यूज कर सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल